So, Assalamu alaikum, everybody. My name is Todd Shea. I am the founder and CEO of Comprehensive Disaster Response Services. Some of you may wonder, what does that have to do with Qurat-ul-Ain Balouch and what happened with the bear? So I'm going to explain to you. First of all, Comprehensive Disaster Response Services has been working in Pakistan since the Zalzala of 2005. We've worked in every disaster zone, including up till now the 2025 floods. We are working in Bunair, Swat, Skurdu, Sugar Valley, Chiniot, Noraval, and we have so far, in the last couple of weeks since we've been doing this mission, helped over 25,000 people and over 1,000 animals, and that operation continues. Mostly we are giving food packs, clean drinking water, and we're doing surveys to help people rebuild their homes. Now, Qurat-ul-Ain Balouch has been working, and we can provide these photos to you later as well. Anybody wants copies of these, we can get them to you. Qurat-ul-Ain Balouch has been affectionately known as QB by Pakistan, as one of the treasured singers of Pakistan, has been working as a volunteer with CDRS, pretty much secretly almost, since 2010 when she was, I think, 21 years old, before she was a singer. In fact, I helped her start her music career by pointing her in that direction of music, telling her that her voice was phenomenal and she should try that. So this is a long association of many years with CDRS, since back in 2010 when we met her. And we've been working here in Pakistan since 2005, where I came here from America with a group of Pakistani American doctors. Now I have 135 employees, a beautiful family, my wife Fozia, a baby Sultan who's 4 years old. I embraced Islam, and we are presidentially awarded non-profit organization working in Pakistan. We are twice certified by Pakistan Center for Philanthropy. We are tax exempt from FBR. We are cleared by every law enforcement and security entity in the country, from national to local police. So we have been at this for a long time. QB has been working with us in animal welfare, in distribution of items in floods. She was with us in Balochistan. She's been with us in Charsada. She's been with us in Skurdu. And she's been with us here in Islamabad, many different missions that she has supported on, without fanfare or going to the media and showing everything what she's doing, because she loves the people of Pakistan, she loves the children, she wants to help the animals, the poor people. So she's done many things that have gone unreported. And it would have probably continued that way, but as fate would have it, she was with me in Skurdu. We went to Sugar Valley and we did a mission there to provide food packs for the affected human beings in that very remote district with my team. And I will just for those who need the translation, I will let Salman, my employee and my associate, to translate for you what I just said to the best of his ability. And then I will go on to the story of what happened up there when we were doing the relief work and how this bear attack happened. It did not happen because she was filming a music video. It did not happen because she was trying to feed a bear. It did not happen because she was teasing a bear or trying to do a TikTok video. All of that misinformation, please, I've called you all here today to ask you to please help me to show the truth. We have some video evidence to show you, and we just want that the real story and the true story is told, so that you, the media, who wants to know the true story, and the people who listen to you and respect you for getting the truth, that they will get the truth. So many people love QB and they don't know what happened because we have been busy working on her, getting her injuries taken care of. So some of those people who were either not involved or were not fair, they made stories and they put them out in the media, and we were silent because we were sincerely caring about QB, the human being, and getting her healthy. I just now, 10 minutes ago, checked her out of the hospital at Shifa International Hospital, where she had surgery just yesterday on her arms. She has her injuries are not life-threatening, thanks God, but they are serious, and they had to have surgery to be done. So even her stitching and her suturing will not be done until later by the weekend because of the way they have to clean the wounds.
So this is the first part, and then we will now go to the second part after translation. Okay. Assalamu alaikum ji. I'm Salman Qazi and Executive Director with CDRS. ब्रदर टॉड ने जैसे आपको बताया कि तकरीबन अगले महीने हम 8 अक्टूबर को अपने 2 दिहाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करने लगे हैं टॉड से अमेरिका से यहाँ आके पाकिस्तान की खिदमत करने में, और वो सदारती अवार्ड याफ्ता और पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी से सर्टिफाइड, और अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लीन और अनटार्निश्ड रेपुटेशन, जो कि आपको पता है हमारे हल्के में एक नायाब चीज़ है. अल्हम्दुलिल्लाह वी बिन हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी इन ऑल क्लैमिटीज़. हम हर आफत ज़दा इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के उन दूर दराज इलाकों से जहाँ रियासत के भी बहुत सारी मशीनरी जो है वो जाते हुए सोचती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ पे अपनी एक आला टीम की मदद से कूद पड़ते हैं, और हम वहाँ पे 2022 के फ्लड में, उससे पहले ज़लज़ले से शुरू होकर ये चीज़, जैसे टॉड ने आपको बताया, इस वक्त भी हमारी ऑपरेशन टीम जो है वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है. और कुरात-उल-आइन बलूच का जैसे आपको बताया कि वो जैसे बहुत सारे और आर्टिस्ट हजरात और दूसरे जो वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग होते हैं, उनका दिल दुखता है हम सब की तरह इंसानियत की मदद के लिए. तो वो भी अपना रोल जो है वो कई सालों से 2010 से, जैसे आपको टॉड ने बताया, कि वो मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में अपना रोल अदा कर रही थी. और इस वक्त भी वो, हम आपको जो है वो तस्वीरी उसके शवाहिद भी फराहम करेंगे कि वो रिलीफ वर्क के लिए वहाँ पे थी और वॉलंटियर थी, जिसका कहने का मतलब ये है कि वो अपनी कैपेसिटी में वहाँ पे थी और उनका कोई ज़ाती या अपने फ़न से मुतल्लिक कोई किसी किस्म की मसरूफियात के लिए वो वहाँ पे नहीं थी. और इसकी तफसीलात ये हमारे हीरो बैठे हुए हैं शहबाज, ये हमारे वॉलंटियर के तौर पे. ओके सो कवर दिस पार्ट. So basically QB to me is like a little sister, and I'm like an elder brother for many years. So I love QB the singer, but I care about QB the human being. So when we were doing the relief work and she was with me, she expressed an interest, since she was already up in the northern areas, that she would like to enjoy Deosai and the camping and the mountains and just enjoy that area. And so I said, sure. So she wanted to go with our driver that we hired, who made a lot of big mistakes, and we will talk about that. We will talk about the public safety issues that this highlights, because that is even more important perhaps than anything else, is people that go up there now that should know certain things so that they don't get the same thing or worse happen to them. So when I sent her and I said, okay, I'm flying back to Islamabad because I have other flood relief work to do. So if you want to take 2 days to go camping, so with the driver, okay, fine. But please take one of my team with. So Shabazz was with us to film the relief work that we're doing, and take photographs so that we prove to our donors and our friends that what we are doing, because otherwise they don't know what we've done. So that's his role in our organization, and he was there with us. So my other team was busy doing relief work, so I said, Sabaz, please go and just look after QB if she needs something. I wasn't thinking of a bear, to be honest with you, that he will be involved in that. But I was just thinking to, help her if she needs something, if she needs help setting up her tent, be nearby in case anything happens where she might need something, right? So we did talk about bears. I told her there's bears in Deosai. But when we did the research and we talked to the people who know, even before we got there, and then when they got there, they asked the people there. They asked the tourist police. They asked the people working at the campsite in the restaurant that where we should camp. They walked around, and it was those people who chose where there's a tent site. And he will show you by the evidence that there are active campsites with burn pits for where people put campfires. This was not some forbidden area that we're not allowed. We were told that this is where you can camp. This is where you can go. And we went there. That's where they went. We were also told that, bear comes along every now and then. Some bears come. We feed them even, but they don't bother anybody. They never bother anybody.
So this is what we were told. So I thought that having Shabazz along with the driver, just added extra protection for her to be safe from anything, not necessarily from bear. My whole thing was just to have somebody else to look after her. So they went up to the mountains that day after I flew back to Islamabad, and they had a wonderful time, and they got up there and they set up the camp where the officials told them to camp, and they did everything that they're supposed to do. They didn't have any food in the tents. They did nothing to attract or provoke any bear. In fact, they never saw the bear. In fact, to this day, QB did not see the bear because she was sleeping in her tent. She had gone to sleep about 15 minutes before this thing happened. Luckily, by Allah, Shabazz was in the car, the SUV, because he was still working on the computer. He hadn't gone to his tent. His tent was set up about 4 meters, 5 meters from, you'll see, from where QB's tent was. And he had not yet gone to the tent for sleep. He was in the vehicle doing some work on his computer. The driver had gone because he wanted to go have a party. In fact, he wanted to take the vehicle because he liked the stereo system. They were having a party on the other side, 500,000 yards away, whatever it is, the other side of the campground, near the restaurant. And he said, no. He said, we just need the vehicle just in case. Leave it here. So they left the vehicle. It was just him and QB there. Nobody came running. All of these people in the media, talking to the media, who have said that they were there and they scared the bear, and all this, it really makes me angry that I read these people saying, we chased off the bear when it was attacking QB, we fended off the bear, we saved her life, presenting themselves as hero to all of you and to the nation. It's baloney. It's absolute baloney. He was the only one there with her. She was asleep in the tent, and when that bear came, it was at night, it was dark. Nobody knew. He was minding his own business, doing work on the computer. All of a sudden, QB felt something heavy come right on top of her head. So just instantly, just by reflex, she put her arms to like protect her head, and then that bear started clawing and digging. It just ripped through that tent like butter and started clawing and digging. That's where her arms got hurt. But thanks God, she screamed, and it distracted the bear for a second. As soon as she screamed, he looked up. He saw a bear, full-grown grizzly bear, doing a predatory attack, unprovoked, slicing through the tent, and just sitting there, bigger than the tent. This was a 7 to 8 foot tall beast. Okay? He could have made a decision right then. He's in the car. He could have said, my God, how could I save her? She's right there. I can't save her. I have to save myself. I have to get this car and get out of here. Because a full-grown grizzly bear, if they want to, they can tear a car apart. They can tear through the window like it's butter. I know that for a fact. This is a miracle of Allah, that she wasn't ripped apart in seconds. But with her scream and with him banging on the roof, he started banging on the roof. That bear got distracted just for a second or two. And she ran out of that tent, which was completely flattened and crumpled. She ran out of the tent and got in the car. And they drove in. Even after they drove, that bear followed them for 12 meters or more. Followed them and got very near to the car like he wanted to chase it. So he was looking for a meal. Why was he looking for a meal? I found out later upon investigation, nobody up there is enforcing safety. The guys at the restaurant are feeding the bear. The tourists are feeding the bear. We didn't feed the bear. He didn't feed the bear. Nobody's feeding the bear. Nobody had food, but people before are feeding the bear, which means the bear associating people with food. And if somebody is associating with people with food, you're a bear and you're fed, then you go to some people and they don't have a food, then that person, the people becomes, to the bear, they are food. Now the people become food. And that is for people that are professional, tourist people and tourist police and professionals running the campground, they should know better. They must know that feeding the bears should be off limits, because that makes the bears come closer and it makes them lose their fear of the human beings. So this is the part that is a public safety for each and every one of you and your families and anybody that wants to go visit there. Because of climate change, the bears' habitat and their food sources have dwindled. So now the bears are hungrier. They have to add layers of fat in the summer because they for 3 months they'll go in a cave and hibernate. They need the fat store, so they have to eat.
So if the climate change is affecting their ecosystem and the food chain, the plants and the animals they eat, because they're omnivores. They'll eat berries, they'll eat fruit, they'll eat animals, they'll eat people, they'll eat anything they can get a hold of. So that's how a bear operates. So this bear, probably very hungry, probably affected, and other bears too. So this creates a new danger. Maybe in 30 years there's not been an attack like this, but now there's been one. And this is a red flag, alarm bell for everyone to understand that these bears are now more desperate, more hungry, and they will come to campgrounds looking for food. And if people don't feed them, they will eat them. They will attack them. There was the next day, these people have told you all that they've shut down the campground after this incident. Baloney, he went up there the next day to retrieve some of his belongings that got left in the melee, that he was so worried about QB and getting her to safety, he left his own stuff. So he went back the next day to get his stuff, and he talked to some of these people. We have a proof. Yeah, he's got the evidence. And there was still people camping there. Not that many, because school has started, it's starting to be, the season's over, the floods are going, so there was less people. But there was a family there with a 7-year-old child the next day. So you think those people, they said they shut down the campgrounds? I've read in all the media, we've shut down the campgrounds for next 2 months because of this incident. Well, then why were people camping there? Why was there a 7-year-old child there who could have easily been a snack for the bear? A snack. I would have been dinner. QB was just an appetizer. He's just an appetizer. But they will take a child as a little taste, a little starter. This is how a bear thinks. They will easily go after the weakest thing they can see. They see that child, and if they think they have a chance, they will take that child. So this is I'm sorry to say, for the relevant officials up there who are talking to the media and telling them a lot of nonsense. They were in a restricted area. They were probably feeding the bears. They probably had food in the tent. They were not doing this. Every single thing they did right, and they took every precaution. They didn't do a single thing to provoke or attract the bear. But because of mismanagement at that camp by the officials, this is why this happened. Not only that, I'll tell you one other very, very sad thing. The bear was actually seen an hour before the attack on the other side of the camp by our driver and some people that work there, and they've admitted it on the tape you'll hear. So they have seen that bear, and later on we asked, why didn't you come and warn QB and Shabazz that bear is there on the other side? They said, we chased it away. 10 or 15 of us people, we made noise and we threw some rocks and we chased away. And so that bear has run away. We thought it will not come back. How stupid. Do they understand that a bear can run 56 miles an hour faster than the fastest Olympic sprinter? And they can go all around. They have this great sense of smell, and they can be in the dark, and anywhere in that campground they can come back. And those people were so stupid to think that they chased the bear off, so the bear, everyone is safe now. How stupid. People need to be retrained up there. I'm not saying they're bad people, but their training is very poor. And the departments that are responsible for training the people that work at that campground, they must be taken to task and held to account, because this is why this has happened. I'm sorry to say. I have nothing personal against these people. But they're trying to now, everyone is trying to make themselves the hero and blame the victims and blame the one real hero who actually really saved her, really actually saved her. And they're saying that he was wrong and they saved her and they chased the bear away. It's what the British say, poppycock. Right. So basically टॉड ने भी दूसरे हाफ के अंदर ये बताया है कि ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ. कुरात-ul-Ain बलोच वहाँ पे कुछ टाइम रिलीफ वर्क के बाद रुकी और कैंपिंग जैसे हम सारे करते हैं, सैर के लिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि हम ये वापस आ गए टॉड, और शहबाज जो है हमारे ट्रस्टेड पार्टनर हैं, उनको एक खातून है, आपको पता है हमारा मशरकी जो अतवार हैं उसके हिसाब से, कि कोई ज़रूरत की चीज़ हो, कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, कोई रास्ते की हेल्प चाहिए हो, तो हमने शहबाज को अपने नुमाइंदे के तौर पे, अपने ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तकदीर ने उनसे सबूत भी ले लिया और वो उस पर माशाल्लाह पूरे उतरे, और एंड में शहबाज ही जो है वो उनकी मदद को पहुँचे, अल्लाह ने वसीला बनाया.
सो ये बात बिल्कुल गलत है जो वहाँ पे सारे सोशल मीडिया में भी, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ भी, जो वहाँ की टूरिस्ट पुलिस है, वो इस इंसिडेंट को एक लापरवाही, एक जैसे मौज मस्ती में कोई बस लापरवाही में कर देता है, या वहाँ पे अंदर टेंट में कोई खाना पड़ा हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं था। ना कुरतुलैन के टेंट में मौजूद था, ना शहबाज के टेंट में मौजूद था। तफसीलात आपको शहबाज इसकी ज़्यादा बताएंगे बिकॉज वो मौके पे मौजूद थे और मैं आप लोगों का वक्त भी कीमती है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं भी पूरा वाक़या दोहराऊँ और शहबाज भी दोहराएँ। तो मैं जो टॉड ने मोटी मोटी बातें बताई हैं उनको टच करके, और उसके बाद मैं शहबाज को मौका दूंगा कि वो पूरा जो इंसिडेंट, क्योंकि वो बेहतर बता पाएंगे। सो इसमें जो सिर्फ ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि ये ना सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा जो एक जुज़्व है वो माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात, जिससे आप हम सब लोग, आपको पता है देवसाई और स्कर्दू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक ट्रेयर्स हैं, एक ख़जाने हैं, नेशनल ट्रेयर्स हैं जहाँ हर कोई जाना चाहता है। और जब वहाँ जाते हैं, हम फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे रॉड बता रहे हैं कि उससे अगले दिन भी जब शहबाज अपनी बिलोंगिंग्स वहाँ लेने गए, क्योंकि उस वक्त शहबाज की जो सबसे अहम तरजीह थी वो कुरत-उल-आइन की जान बचाना था और उनकी मदद करना था। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, ये जर्नी की ना मेरी आदत है, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई, ड्रोन की बताई। सो दिस इज हाउ हम जर्नी जो स्टार्ट की ना, मेरे पास मतलब मैं क्यूबी को तो ले नहीं रहा था, इट्स लाइक कि वो टॉड लाइक अ सिस्टर, हम उसको मतलब वो सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं करती। सो दिस इज लाइक अब इस ये सारी जर्नी है, ये हम देवसाई में एंटर हुए हैं, आप चलाएं इसको। So just give it 1 second. Let him complete, Yeah, and we're going to go through stop. We're going to go through some of the videos. We will play them. We will show you everything. And anybody that wants copies of everything, either give us your email, your thumb drive, whatever. We will give you every single thing, every photo. You can put it out there. We just want the truth and the real story to be told and to be understood. So जो लोकल ड्राइवर थे जो अपने आप को इस वक्त वहाँ के रेस्क्यूअर के तौर पे पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो ना सिर्फ कि वो बात गलत है हकीकी तौर पे, बल्कि उनको ये शौक़ हुआ, आपको भी शहबाज बताएंगे, कि वो एसयूवी जो जीप थी, गाड़ी थी, वो कहते हैं कि अब चूँकि आप लोग तो यहाँ आ गए हुए हैं और आराम करेंगे, तो मैं कुछ टाइम के लिए अपने दोस्तों के साथ आपकी गाड़ी ले जाऊँ, इसका म्यूज़िक सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो शहबाज ने ज़िम्मेदारी इसका सबूत दिया और वो उन्होंने कहा कि नहीं आप मत लेके जाएँ, बिकॉज़ बाद में वो गाड़ी ही काम आई। तो ना सिर्फ कि वो ये बात गलत है फैक्चुअली तौर पे, वो वहाँ पे नहीं थे, एक और बहुत बड़ी जो फ़िक्र की बात है वो ये है कि इस रीच को कुछ वक्त पहले वो, क्योंकि ड्राइवर कुछ फासले पे ही 500 से 1000 गज़ दूर ही अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठा हुआ था, और उसने उस बेर को वहाँ पे देखा, और उसने फिर भी आके गवारा ना किया कि वो आके वॉर्न कर दें एक निहत्ती खातून, और साथ ये क्या कर सकता है 7-8 फुट के मतलब जंगली रीछ का। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलमिया की बात है कि चले वो अपना पर्दा रख लेते, वो ना बताते कि हमने नहीं बताया। एक तो उन्होंने वार्न नहीं किया, और फिर बाद में वो ये शो कर रहे हैं कि उन्होंने आके इनको बचाया है, ये वो ठीक है, वो बाद में गाड़ी चलाई होगी, उन्होंने हॉस्पिटल तक आए होंगे, लेकिन वो सब की तो नौबत ही ना आती अगर वो इनको वार्न कर देते, और कहीं फासले से अपने आप को महफूज रखते हुए, जो इंसान की फितरत है वो अपने आप को भी बचाता है। लेकिन यहाँ पे शहबाज भी हैं जिन्होंने अपनी जान ख़तरे में डाल के, और वो आपको बताएंगे कैसे फिर जो है वो वहाँ से रेस्क्यू किया, और सारी बात अब प्लीज़ आप जर्नी Wait a second. So you folks in the media, you know very well that sometimes the first thing that comes out is not necessarily the truth about a story. You know that sometimes it takes time for the truth to come out. Yeah. So we were considering only QB's health. From our standpoint, we're not worried about showing photo, video, or talking in all of this noise that people were making of false stories, because our time and our effort up till now has been to make sure that QB's injuries and are taken care of, and all of the trauma she's been through and that he has been through, we deal with that. Now is the time, right now, to tell our side and the truth. So we are available to you by phone, by meeting, by email, even after. Any follow-up questions you have today and any day. We have nothing to hide. We have the truth on our side. We have been blessed by Allah that this young lady has survived something that usually can never happen. It's a bigger chance of lightning striking you than to be attacked by a bear and come out with only injuries on your arm. These things can rip your face off in 1 second.
They can kill a man and rip his heart out and not even use their full strength. They are natural born killers, and they are these perfect killing machines. So this is a miracle as far as I'm concerned. If anybody can show me how this is not a miracle, the way that this has worked out, that Allah saved this young lady, because she has a purpose, not only in music, but all the relief work, all the good things she's doing in life that she doesn't really talk much about, but she's doing. Allah has a plan for her to do a lot more for this young lady. And that's the real story. And before Shabazz goes through and shows you everything, I just want to, personally, if you want to, you can. If you don't want to, it's okay. But I'm going to stand up and give this gentleman a round of applause. Because this is the real hero in this thing. So please, now you can walk them through. So ये मैंने ड्रोन शॉट लिया तो मैंने कहा मैम को ज़्यादा ले नहीं रहा था क्योंकि वो प्राइवेसी मतलब करती, मैं तो अपने इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज बना रहा था क्योंकि मैं पहली दफ़ा मतलब देवसाई में इस तरह गया था, मेरे को ड्रोन गोप्रो ईच एंड एवरीथिंग. सो दिस इज ये पहला शॉट था, हम जब जा रहे थे मैंने एरियल शॉट लिया था. चलाएं इसको. तो ये फिर हम ये कैंपिंग साइट तलाश कर रहे हैं. तो हमने ना ये तलाश कर ली, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ वाले आए, इन्होंने कहा ये कैंपिंग साइट ठीक नहीं है, आप कैंपिंग साइट पे जाएं. फिर वो चले गए, उन्होंने ये क्यूबी आ रही है. नाउ वी आर मूविंग. ये देखिए सामने लैम्प है, मतलब ये कैंपिंग साइट है, ये फायर है. ये फिर मैंने क्यूबी के साथ ना ये लगाया कैंप, और ये कह रहे हैं कि ये मेरा कैंप लगाया. अगर ये रेजिस्टिंग साइट थी तो ये हमारी हेल्प करने क्यों आए थे? ये उन्होंने बंदे भेजे थे हमारी हेल्प करने. और ये एरियल शॉट है इसका, और ये क्यूबी खड़ी है, ये साइड शॉट है. और ये सारा देखें, ये कैंपिंग साइट है, वो फायर जली हुई है पहले, उसकी भी मेरे पास वीडियो है. तो ये कोई हम दूर नहीं थे, ये दूसरा है. और वो दूसरा जहाँ से हम भाग के गए थे, तकरीबन वहाँ से ये 20 मिनट की मतलब पैदल है, और 10 मिनट लगते गाड़ी में. And not a single person said don't camp there. Okay, और ये हम जा रहे खाना खाने, क्योंकि हमने खाना वहाँ नहीं खाना था, हमने होटल में खाना खाना था. तो ये हम पहुँच गए वो बड़ा पानी पे जो होटल है वहाँ पे, ये हम खाना खा रहे थे. तो ये मैंने तो ली नहीं उसकी. फिर हम ये शाम को वापस आ गए, वो गाड़ी देखे नहीं गया था ड्राइवर. मैंने कहा यार गाड़ी मुझे देखे दो, अभी आपको कोई गाड़ी नजर आ रही. ये रात हो गई थी, मतलब इतनी रात थी कि मैं आपको बता नहीं सकता. और ये लास्ट वीडियो मैंने बनाया था सोने से पहले. Now there are people who are actually asking, why didn't you take video of the bear and show the bear? Yeah. Well, think about it for a second. It's after dark. He's put his cameras away. He's not planning on anything except to go to sleep soon. And when that bear happened, this attack happened within 45 seconds of her screaming and her getting in the car. 45 seconds. And he's worried at that moment, how can I save QB from this beast? What can I do to save her? He's beating on the top of the car, making noise. He's honking the horn. He's turning the lights, whatever he can do to try to save her. He's not thinking, oh, I can get a good picture for the news channels. No, there's no time. There's no thinking. He only was thinking, how do if I go outside to try to save her, that bear will kill me in an instant. At least I'm in the car. What I can do, try to distract the bear. And he did. He distracted the bear, because if he had not distracted the bear, after her initial screams, he would have gone right back to tearing her apart. And then we would be going for janazah, and we would all be doing a story of this horrible tragedy of what has happened. This poor girl was killed. But thanks to Allah and thanks to his thinking and his heroism and his bravery, even though he was scared to death, she's still alive today. That is the real story here. So अगला slide. तो मैं आपको अपने इस लैपटॉप में दिखा देता हूँ, वो चलेगा, शायद आपको नजर आएगा. What is wrong with this thing? I don't know, it's not working properly. और ये हैं प्रूफ उसके, इनकी कन्वर्सेशन, ड्राइवर की कन्वर्सेशन. आप ऑडियो अब ये सारी कन्वर्सेशन Turn it back to the beginning. यार मैं जब आप ऊपर गए थे, जब आप ड्राइवर के रूम में, जब मैं गाड़ी चला के वहाँ लाया था ड्राइवर के रूम में, तो वहाँ पे मेरी ना कुछ चीज़ें भेजी थी. वहाँ पे ना मेरे ख्याल में ना मेरा मेमोरी कार्ड उसमें बड़ी कीमती चीज़ें हैं. और वो है, तो आप किधर से आए थे? आप किचन में मैं गाड़ी लाया था ना उधर चला के, कि मैं उधर
कौन से किलोमीटर गया मुझे ये भी याद नहीं है। तो आप किधर थे उस टाइम? आपने देखी सर? हाँ, जहाँ मैं गाड़ी चला के आया था वो होटल पे। ये कह रहा मैं होटल पे था। फिर आप जब गाड़ी छोड़ के चले गए थे, जब आप गाड़ी छोड़ के चले गए थे, जब मैंने कहा था गाड़ी कैसे चलाते हैं, इसको कैसे चलाना है, याद है ना? वो उस टाइम मेरे ख्याल में या उस टाइम गिरा है। दूसरी बात है, मैंने ना वो स्लीपिंग बैग और अपने शूज ना बेर की तरफ फेंके थे। ये समझिए कि ड्राइवर ने सुभाष को बचाया, हालांकि मैं गाड़ी ऊपर से चला के लाया हूँ आपके पास, आपको उधर सो नहीं देना। हालांकि मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप मुझे कह रहे थे रात को आ जाना, हमारे पास आ जाना, ये कह रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी मैंने कहा यार नहीं औरत है। हालांकि मुझे वो अपने बॉस का डर था, और यार उसको ये तो बता के मैं गाड़ी चला के लाया हूँ, मैं फोटो को रिकॉर्ड करके ये अब कैंपिंग वाले हैं। अब It's going to feed back. ये मैंने ऑफिशियल्स की सारी ऑडियो है, ईच एंड एवरीथिंग। ये सारे यार वो जो सोशल मीडिया पे बना हुआ है वो तो सब झूठ है, और ये ड्राइवर तो हमारे पास था तो और ये इवन इसमें ये भी कह रहे हैं, प्रूफ है विद वीडियो, ये कह रहे हैं हमें तो आवाज़ ही नहीं आई, ना ग्लैम पे आई ना हमें आई आवाज़। आई मीन कि जब हम भाग के वहाँ निकले, मैं कोई अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, आई मीन कि मैं लाहौर का हूँ, मैंने ज़िंदगी में एसयूवी नहीं चलाई, लेकिन उससे 1 घंटा या आधा घंटा मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। पता नहीं मुझे एक वाइब आ रही थी कि यार मैं लूँ हूँ, मतलब इसने मुझे कैंप में बिठाया, हमारे बाप दादा ने भी कैंप नहीं किया। मैं 2 मिनट बैठा तो मैंने 2 सेकंड पर डर लगे, मैं चला गया, जाके गाड़ी में बैठ गया, और गाड़ी में ना मैंने ना हल्का सा शीशा नीचे कर लिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा चल इसकी आवाज़ आएगी ना, तो जब उसकी आवाज़ आई, अब आपने बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री देखी होगी वाइल्ड लाइफ के जो ऑफिसर की, ही सेड वो 11 फीट का था। अकॉर्डिंग टू सर्च हिमालयन बेर जो है, हिमालयन बालू, वो 8 से 9 फीट से ऊपर नहीं होता। अब उन्होंने देखा ही नहीं, और वो मेरे सामने इतना खड़ा था, तो वो क्यूबी के ऊपर वो ऐसे खड़ा था। क्यूबी को उसने ना, मेरा नहीं ख्याल उसने ऐसे बस देखा है कि ये क्या है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अटैक किया। और जब क्यूबी ने कहा शबाज हेल्प हेल्प, तो लिटरली मैं बाहर निकला, मैंने समझा इसको कोई और मसला है। बाहर निकला तो मेरे तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई, मैं अभी तक सो नहीं पा रहा। मतलब लिटरली सारी बात, मेरी बेटी, मेरी ज़िंदगी, मेरा सारा कुछ याद आ गया। मैं लिटरली गाड़ी में आके ना दुबक गया, और उस 2 सेकंड में ना मेरी ज़िंदगी सारी मेरे सामने आ गई। फिर मैंने क्या किया कि मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया, हॉर्न का मुंह उस तरफ था, हॉर्न उसको आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने गाड़ी की हेडलाइट चलाई, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं बाहर निकला, ये मेरे हाथ जख्मी है। मैंने नेशनल ज्योग्राफी पे देखा था कि बेर्ड्स जब आते हैं ना तो आपने हाथ नॉइज करना होता है। फिर मैंने छत के ऊपर चढ़ के ना उसको पीटना शुरू किया, तो बेर ना एकदम से मुझे देखा, वो थोड़ा साइड पे। फिर मैंने अपना एक शूज़ उसको मारा, फिर दूसरा शूज़ मारा, फिर मैंने अपना स्लीपिंग बैग उसकी तरफ फेंका। अब वो जब मूव हो गया ना, तो अब मैं इतना बहादुर से बेवकूफ़, वो मुझे एक स्नैक की तरह खा जाता। मैंने फिर गाड़ी ना रिवर्स की, क्योंकि गाड़ी इस तरफ थी, मैंने रिवर्स कैंप की तरफ की। मैंने क्यूबी को कहा मैं बाहर नहीं आ सकता, अगर मैं आया ना हम दोनों चले जाएंगे, आप हिम्मत करके बाहर निकले। अगर मैं बाहर निकलने वो जाता तो मुझे जिप्पे खोलनी पड़नी थी। मेरे बाप दादा ने मैंने कैंप किया, मुझे पता नहीं जिप्पा किधर में। तो मैंने ना मैम को कहा इसको फाड़ें, कुछ करें, निकलें। लिटरली जब मैम निकली है ना तो उनकी ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं शॉक हो गया। अब इसमें ना एस्कॉम की तारें बिछ रही हैं, एरियल शॉट है, अब वो प्रॉपर नजर नहीं आ रहा। वो मैं ऊपर लेके गया गाड़ी, वो गाड़ी आगे जाके फंस गई। मैंने रिवर्स की गाड़ी, मैं लेके गया, वो मैं नदी की तरफ ले गया। तो मसला ये हुआ कि बेर हमारे साथ साथ था, मे भी उसका टेस्ट लगा था पहली दफ़ा, या वो मेरे साथ भाग रहा था। फिर मैं लिटरली जहाँ भगाते भगाते वहाँ गया, वहाँ पे मैंने हार्न दिया। वो सारे फिर जो 10-15 बंदे थे बाहर आ गए। फिर मैंने कहा मैम, अब मेरा कैमरा कुमरा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मेरे पास इसमें प्रूफ थे, मैम का पासपोर्ट था। तो मैंने मैम को देखा, उनके हाथ पे लगी। मैंने मैम से पूछा कि मैं चीज़ें ले आऊँ, मैंने कहा ले आओ। मैंने ड्राइवर को बैठाया, मैं विद इन उसी 2 मिनट उसको फर्स्ट एड टूरिज्म के पास छोड़ के वापस गया, और टूरिज्म वालों ने उसकी तस्वीरें उतार दी। अब ये हमारा बॉस है, हम मतलब मरनों की तस्वीरें तो नहीं उतारते। मैं फोटोग्राफर हूँ, 15 साल से हूँ टॉड के साथ, लेकिन हमें एथिक्स का पता है कि बेसिक स्विक सेंस है कि मरते हुए लोगों की या ऐसे किसी फीमेल की तस्वीरें नहीं उतारनी। उन्होंने तस्वीरें उतार के अपनी स्टोरी अपलोड कर दी, हमें तो कोई पता ही नहीं था। मैं तो पैनिक था, मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी चीज़ है। फिर मैं वापस गया, मैंने चीज़ें इकट्ठी की, मैं चीज़ें इकट्ठी करके वापस लाया। फिर वो ड्राइवर कह रहा है जी देवासाई बड़ा पानी से वो 1 घंटे 15 मिनट में पहुंचा।
और मतलब वो बोइंग 747 तो नहीं था, और वो इतना, और एक और लेडी इंजर्ड है और वो स्क्रीम चीख रही है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि वो इस तरह झटके लगाता। हम 2 घंटे 10 मिनट में पहुंचे हैं, जिसकी मेरे पास प्रूफ कॉल की है कि उसकी मैंने डिटेल नहीं की, और वीडियो का भी मुझे इस तरह प्रूफ है कि मुझे टाइम का पता है। सो जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे तो हमें टोटली हमें होश ही नहीं था। बाद में मीडिया में जो आया वो आपके सामने वो सब झूठा है। फिर ड्राइवर लोकल था, वो लोकल से पता नहीं क्या बात कर रहा था, तो फिर उसने मतलब बात की। तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे मैं आपको ये इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। Can we figure out a way to put it out on this one? No. Is it working now? ये इम्पोर्टेंट वीडियो मैं कॉपी करवा Try to see if you can get it to play on there. तो ये बहुत जरूरी है। While he's working on that, I have one last thing to say. So it appears to many of you, I'm sure, that I am angry. Yes, I'm angry, and I'm angry. This is the reason I'm angry. We trusted the driver, who instead of keeping his people safe that we paid him to keep safe, he ran off for a party, and he didn't warn the people about my employee and QB about a bear in the area. He just said, "Oh, it's okay. He's gone away," and they didn't even bother to warn. I'm angry that we trusted the people who are running that campground. We asked them about where to be. We asked them where to camp. We checked everything. So we are angry that the people, the officials, and the people that are there working that we trusted to know what's going on, they misguided my people. That's the problem I have. 8 minutes. I will take questions, but please just that I want you to tell me. ठीक है, बेसिकली देखिए जो बरहमी है या जो तशवीश है वो बहुत वाज़ेह है, आप देख सकते हैं, वो नुमायाँ है। और वो जो कुरात-उल-आइन के साथ हुआ वो तो हो गया। इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ से होती है कि ना सिर्फ ये कि सच बताया जाता, अपनी गलतियों का अजाला किया जाए, इस्लाह हाल की जाए, को जाके वो उनको नदामत होती कि वो हेल्प नहीं कर सके, उनके पास मेहमान आए हुए हैं। वो बजाय इसके इनको जो है वो मतलब शहबाज को और कुरात-उल-आइन को कि जी इनकी गलती है और ये इनका फॉल्ट है, तो वो डेफिनेटली उसकी वजह से बरहमी है। और आपके सवालात जो है वो हम ज़रूर लेंगे। Okay, good question. Just one question, and then we want to play this video. The gentleman who had the question. Where is he? I think he has. He's gone away. Okay, so go ahead. ये देखिए आप, ये सही कॉल आवाज दे मैंने गाड़ी उठाई यहाँ से बोला ये वर्तमान आया था ना एक तरफ डिस्ट्रीब्यूट आ गया मेरा दुकान में आ गया पीछे हां इसका कैमरा इधर रहा हुआ और जब मैं दिख रहा हूं ये देखिए ये कैंपिंग साइड है, यहाँ तक देखिए ये कैंपिंग साइड है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, चली हुई है मतलब दूर नहीं थे। कैंपिंग साइड जो हमें बताई है वो यहाँ उससे ही फायर नहीं है, ये फायर है इसमें इसने जलाई हमने नहीं जलाई, उधर भी फायर करने से उधर भी फायर करने से उस साइड मतलब ये था कि ये इसी एरिया में है, उस जोन में है, इसी एरिया में ही है, मतलब इसी एरिया में, क्योंकि इन्होंने हमें बताया था ये आउट ऑफ जोन नहीं है। बाहर में आराम में आ रखा होगा, फिर मुझे महसूस हो गया। अब हमने चीख मारी आपको आवाज आई मैडम नहीं, वहाँ पे आवाज किया ये बात का और अगर आप वहाँ आते तो कितनी देर लगती है यहाँ इधर 500 आते हैं 10-15 मिनट आते हैं तो वो पैदल पे हम भी नहीं आ रहा। तो ड्राइवर को चाहिए था कि ड्राइवर आगे पैदल नहीं होना सकते थी। अब ये कौन है कि ड्राइवर वहीं पर सो रहा था, ड्राइवर चला रहा था 4G इस्तेमाल के ऊपर और क्या उसे कहते हैं नहीं ड्राइवर देना मुश्किल खाना खा रहा ड्राइवर खाना खा रहा
He was lying to you all. He was the hero, but he was a zero. अब इसमें ये टूरिस्ट की भी जो गलती है, जो हमारे सो कॉल्ड पंजाबी हैं, इनका आगे जाके गन पाते हैं, देखें कितना गंदा हो रहा है ये देखिए ये बंदा किसने आया और अभी के जेल यही में हमारा जानता था। Normally, Shabazz is scared of his own shadow. Do you think that if the people had come and warned him, there's a bear in the area?